सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम नमस्ताराय नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या भक्ति विद्या योग विद्या धर्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः परब्रह्मणे श्रुतिमात्रे समस्त ब्रह्म विद्या भक्ति विद्या योग विद्या धर्म विद्या आचार्येभ्यो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यो देवताभ्यो नमः। संकल्पः तेषां सर्वेषां कृपानुग्रहेण उपनिषदुक्त ब्रह्मात्मैक्यबोध सिद्ध्यर्थं पुराणेतिहासोक्त भगवद् भागवत ऋषिमुनिगुरु देवता दर्शनानुग्रहानुभव प्राप्त्यर्थं सनातन धर्मस्य वैदिक हैंदव संस्कृतेः साम्प्रदायानां शास्त्राणां गुरुशिष्य भक्त भगवत परंपरायाः पुनरुत्थान जागरण विश्व व्याप्ति द्वारा विश्व आध्यात्मिक प्रगति द्वारा विश्व शांति कल्याण एकता प्राप्त्यर्थम् अस्मिन् धर्म संस्थापन कार्ये निष्ठितानाम् अस्माकं सह समस्त भक्त साधक सेवकानां पूर्णायुरारोग्य ऐश्वर्य क्षेम स्थैर्य धैर्यादि प्राप्ति द्वारा बाह्य अभ्यंतर शत्रु विघ्न निर्मूलन द्वारा धर्म संस्थापन कार्ये दिग्विजयार्थं श्री ब्रह्मांड पुराण अंतर्गत अध्यात्म रामायण शास्त्रस्य पारायणम् अध्ययनं श्री बाला त्रिपुरसुंदरी मातुः सहस्रनामावल्याः पारायणं समापनं श्री देवी स्तोत्रांतर्गत देवीनां मंगलारती स्तोत्राणां पारायणं वयं सर्वे करिष्यामहे। आदौ श्रीरामनाम संकीर्तनम्। ओम श्रीराम जय जय राम 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 जय राम जय राम। ओम नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओम श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। श्री ब्रह्मांड पुराणांतर्गत अध्यात्म रामायण शास्त्रम् उत्तरकांडं पंचम सर्गः। श्रीरामगीता श्री महादेव उवाच श्रीराम उवाच। Friends, let us chant from mantras number 55 to 56, 57, 58. चार पढ़ो बस। आदौ च मध्ये च तथैव चान्ततः। नहीं, उससे ऊपर गामी पढ़ने में 54 ध्यात्वैवमात्मानमहर्निशं मुनिः तिष्ठेत् सदा मुक्तसमस्तबन्धनः प्रारब्धमश्नन् अभिमानवर्जितः मय्येव साक्षात् प्रविलीयते ततः। आदौ च मध्ये च तथैव चान्ततः भवं विदित्वा भयशोककारणं हित्वा समस्तं विधिवादचोदितं भजेत् स्वमात्मानमथाखिलात्मनाम् आत्मन्यभेदेन विभावयन्निदं भवत्यभेदेन मयात्मना तदा यथा जलं वारि निधौ यथा पयः
क्षीरे वियत् व्योम्न्यनिले यथा निलः इत्थं यदीक्षेत हि लोकसंस्थितः जगन्मृषैवैति मृषैवेति विभावयन्मुनिः निराकृतत्वात् श्रुतियुक्तिमानतः यथेन्दुभेदो दिशि दिग्भ्रमादयः यावत् न पश्येदखिलं मदात्मकं तावन्मदाराधन तत्परो भवेत् श्रद्धालुरत्यूर्जित भक्तिलक्षणः यस्तस्य दृश्योऽहम् अहर्निशं हृदि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्रीराम शरणं मम श्रीव्यास शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीव्यास शरणं मम शरणं मम शरणं मम. Friends, sublime topic. In fact, as a research scholar, like a research scholar, every word, whether it is vocative addressing, whether it is a particle, whatever it may be, every word has to be thoroughly understood, digested, caught with regard to its context there. That way, every sentence, every shloka, and in that, the jnanam that is given, the attitudes that are given, the sadhana that is indicated, the precautions that are told, the cares they are hinted at, the remedies that are told, we have to that way thoroughly grasp each shloka. Like when we were children in our language classes, first language, second, third, we used to have both things, poetry and prose, padya bhaga or gadya bhaga. In the poetry, they used to give us, some lesson of some of the scripture. Then only 5 shlokas will be given. But then each of the shloka, isn't it? The grammar aspect of it, we were supposed to study. Every word, in which case it is, which is gender it is, which it is person it is, and then singular, plural, or that one, and past, present, future. Every word has to be understood. So too, the meaning of each word, meaning of the entire sentence, then what is the essence in that shloka. उसका पूरा इतना scrutinize कराकर these two, you must have also studied, it can mean Hindi also. हिंदी में भी व्याकरण है, तो सुंदर व्याकरण की दृष्टि से पढ़ाते थे सारा, एंड इन टेस्ट होता था. They will tell also, tomorrow there will be test on these 2 shlokas. So thoroughly padu. Then we have to struggle at home. And all of them. Main thing is of the grammatical. Through grammar, all the meaning is thoroughly understood. In the same way, we have to study Adhyatma Ramayana in that sense. Then what is hidden in that deep things will. Same is with every Shastra. सारे उपनिषदों में और आदिशंकरा gives that way only the bhashya and facilitates for our understanding. But do we have patience for it? Can we take out time for it? Do we have the mental ability for stability there? Do we have the intellectual ability to pierce through them and understand? Is our ego ready to sacrifice its own whims and fancies and come for the spiritual path? How many questions are there in our life? Therefore, though born as Indian, born as Hindu Sanatana Dharmi, with all the gurus or shastras around, still we are bankrupt in our spirituality. Zero in our spiritual growth. अब करें क्या? You have to put the efforts, you have to give the time. You have to show the interest. Anybody? Otherwise, how will it come? So, let us see this mantra number 54 we have seen, but literal meaning is Evam. In this way, Munihi, I gave you the meaning of Muni, Mananat Munihi, Maunat Munihi, Aharnisham Atmanam Dhyatva. All the time he is in the Atma Dhyana only. Continuous flow of contemplative thoughts only towards the self. While doing so, he goes away beyond from
all the anatma and discovers the atma anubhuti. Thereafter, tishtet sada, stay in that only. Atma anubhuti. Once you are there, while entering also, while being stabilized there also, and getting established in that, what one thing you have to take care about is mukta samasta bandhanaha, freed from all bondages of the anatma. Earlier was there because of non-discovery of the atma. Now, how many examples can be given? But more important than examples, we have to feel this meaning of the word freed from all bondages. Samasta bandhan se mukta. Best examples of swapna. How many bandhanas we have in swapna? जागृत में भी वही होते हैं. स्वप्न का we give example first. When we wake up to our essential self, who is other than the dreamer and dream world and substratum of dream and dream world, what is that which of the dream now will bind him? सारे बंधनों से मुक्त. मुक्त समस्त बंधन. Okay. And what are the bandhanas we talk about generally in Veda? Only these three. Anatma Rupi Panchakosha taken as an Atma. That is one bandhana. है ना. अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, the पंचकोशों को आत्मा मान बंधन. Through the bondage of this, we are bound to the continuously changing world with the raga, dvesha, kama, krodha, the durgunas. That is another bandhana. Because of raga, dvesha, kama, krodha, we are bound in the world of karma. That is another bandhana. Now, when we do the karma, do you think karma phala will leave us? No, the karma phala will bind. That leads to the janma marana bandhana. Samsara bandhana कहते हैं. So samsara bandhana, get freed from. Janma marana bandhana, get freed from. Get freed from the karma phala. Get freed from the kartrutva. Get freed from that because of freedom from the raga, dvesha, kama, krodhadi. And they all are because of identity with the upadhis, bandhana. To get rid of the panchakosha bandhana. All that gone away. Because you are established in the self. No, nothing binds me now. Now I am bound as a Jagrat Purusha. And so many things I have to do. ये सब बंधन ही है. अगेन निद्रा हमारे कंट्रोल वाली आती नहीं निद्रा. और निद्रा का बंधन है हमको. जब नहीं चाहिए आती, जब चाहिए नहीं आती. सो टू द स्वप्न का बंधन है. ऑल बैड ड्रीम्स कम. सो अवस्थाओं का बंधन, तीन देहों का, पंचकोशों का, जीव भाव का बंधन, कर्म कर्मफल का बंधन, जन्म मरण का बंधन. देन ऑल द लौकिक बंधनास, है ना, बिकॉज ऑफ द एषडास. With the human beings, the bandhana. Because desha bandhana, kala bandhana, vastu bandhana, vyakti bandhana, paristiti bandhana. They are all binding us. Desha, kala, vastu, vyakti, paristiti. Mukta samasta bandhana. You're free now. That freedom cannot be explained in any language, can't be shown by any example. At the most is the dream and waking. From the dreamy, all bandhanas, the waker when he wakes up, how free he becomes from everything. In dream you might have taken loan from someone, or an accident in the bleeding, or somebody cheated us, or became old, or nobody helping. कितने कितने सपने में आते हैं. But when you wake up to the waker stage, all mukta. Now in the present world we have janma bharana bandhana, jara roga bhaya bandhana, then that mrityu bhaya ka bandhan hai. Everything. अस्तित्व का भय का बंधन, चीटिंग का भय का बंधन, दुख मिलेगा करने के उस भय का बंधन. तो सारे भय से बंधन हो जाए, मुक्त हो जाएंगे भय रूपी बंधनों से. सो इन दिस वे तिष्ठे सदा मुक्त समस्त बंधन. फील दैट मीनिंग. इन द आत्मज्ञानम वी आर फ्रीड फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस. वी हैव द अदर बंधनास आल्सो, द अज्ञान बंधन, जीव भाव बंधन, देन प्रारब्ध बंधन, देन ऋण बंधन, देन धर्म बंधन. वो भी है ना, धर्म का बंधन.
वर्णाश्रम बंधन, ये सब है बंधन ही है. Every one of them will be gone if we, while this way contemplating on self, discover our identity with that pure Atmavastu, whose gunas are mentioned time and again in the above shlokas. We are in so many classes and texts studying, therefore, sequentially we may not remember all, but covering we are doing of all topics. Exclusively to be studied is the Shastra Adhyatma Ramayana. मुझे अब पता चला. It cannot be taken lightly mixing up with the other Shastras. Exclusively. Yeah, you should have that mind to be able to remember all of that, like the Ashtavadhanis and all. Focus exclusively on the text when that's studied with continuity of what is studied earlier. Third line. Prarabdham Ashnan. Go through the Prarabdha. That's why ज्ञानी को प्रारब्ध आते हैं, ज्ञानी को प्रारब्ध नहीं होते हैं. His upadhis will have prarabdha, but he will allow it to happen. He will not fight with it. विचित्र होता है. एक संत महात्मा का एग्जाम्पल देते हैं. With his disciple is going. Suddenly one place he stopped. Told the disciple, कोई कपड़े का टुकड़ा है क्या? कपड़े का टुकड़ा. सडनली भाई गुरु आस्किंग, पता देन वो जो उसका उनको उत्तरीयम होता है ना अपर, वो हाँ है, फाड़ के तैयार रखो बोला उन्होंने. He just carried and kept ready. After some distance gone, वो एक आगर पत्थर था. गुरु महाराज का toe, it just hit it and it just got wounded, started bleeding. Then he told his disciple, कपड़ा है ना अब बांध दो. He tied it. Then he asked it, hey Guru Maharaj, do you know that you are going to get wounded? Ah, he says, I know it. Are when you know it, why don't you avoid it? He says, it is body's prarabdha. I need not avoid it and I am not worried about it. That's why I told you keep kapda ready. बांध दिया ना, अब चलो आगे. That is the meaning of prarabdha ashnan. He knows that's going to happen. He can avoid, but he says, I will not. Because शरीर का हूँ मैं, शरीर नहीं हूँ. There is a test to prove that I am not the sharir. This is the answer to all our that questions. If the Jnani is such a Shaktishali and knows all the past, present, future, why can't he avoid his disease? Why can't he avoid his death and all, or humiliation, etc.? अरे भाई ये सब उपाधि उनके प्रारब्ध हैं, वो होएंगे, होने दो, they don't touch me. And that is the way they have to exhaust. And in case of such some great masters, these prarabdhas are not theirs. They are of the disciples who have faith on him. So then he takes that so that that disciple's path is cleared for his sadhana. Like in the world we see, we take away our scooter साइकिल वो पाथ में है ताकि आपके बच्चे जो है चले जाए आगे. करते हो ना? So that's what they do. They take our prarabdha, the gurus, etc. They go through. But very rarely they do it only when they know that we are spiritual seekers and in the path spiritual, some obstructions are coming because of prarabdha which he cannot avoid. And when he goes to that prarabdha, his sadhana is hindered. And he is a great devotee. I have been with some great Mahatmas, yogis in life. You know, suddenly, when we are talking, you will feel so much headache and stomach. He says, come after 1 hour. After 1 hour, we went, what happened? All other disciples, they all laugh and say, हाँ, ये कोई भक्त था, उन्होंने कहीं अमेरिका में, जापान में रो रहा होगा, गुरु बचाओ इस पेन से. Guru took his prarabdha. Gurudev was a yogi in all these things, but he never showed it. The Mahayogis, Siddha Purushas, Avadutas, who have this capacity. Some of the very rarely highly evolved, they are such, not only our prarabdhas, but all our negativity. We can offer it to them. Do you know what they do? They recycle it. They use it for positive purpose. This our negative is not a negative to them, rather it is an energy. Like all the garbages, are they not converted into energies? You understood it.
So we offer to them, it doesn't bother, they are not worried by it. They convert into energy and use it for some positive purpose. विचित्र होता है उनका. In the whole world, if one country imports maximum dust and dirt from other countries, is India only. Do you know how many tons and quintals of waste material we collect from other countries? पैसे देकर खरीदते हैं. पता है कहाँ यूज होता है, अब आप देख लो आप. Anyway, so prarabdhamashnan is told. Prarabdhamashnan abhimana varjitaha. This ego that I have realized, the self, because self is everywhere there. Vichitra. A jnani can never have abhimana ahankara. Because if he says that today I became jnani, therefore I am arrogant of it, इसका अर्थ क्या हुआ? कल तक तुम बेवकूफ थे. You can't afford to be arrogant of knowledge. It proves that till yesterday you are मूर्ख number one. Therefore अच्छा हो ज्ञान मिला, अब चुप बैठो. अभिमान वर्जिता. If you claim today I become wise, that means yesterday you were otherwise. So in this way, last one is कि मयि एव साक्षात प्रविलीयते. Tata means after the deha's prarabdha is over, this jivan mukta merging in the Lord becomes videha mukta. Now in such a topics, even if you listen from Guru Upanishads for 50-40 years also, one doubt definitely continues to remain. What is the doubt? When you say he merges in the Brahman, will he not be there? See the question. That is why, because as an individual, separate from total, and that individuality identified with Upadhi, and living like that for millions of life, gives such a strong notion that the living can be only this way possible. And if this is transcended, there is no other way of being existence. Yes, a strong doubt hota hai. Like the one who takes the rishwat and all, to tell him to stop. How can I? यही तो मेरा main salary will tell. झूठ बोलने वाले को या कोई ऐसे एडिक्शंस है उसको बोलो ये रोक दो. अरे दिस व्हाट माय लाइफ इज. आदत हो गया. जो गुस्सा करने वाला है वो ऐसे रहेगा होल लाइफ. द सेल्फिश सेंशुअस पर्सन्स, उनको उसी में कंफर्ट है. लाइक ए पिग इज हैप्पी इन इट्स ओन डर्ट एंड ऑल दैट. So to this, we all, because habituated to living as separate from Paramatma in a gross manner, identifying with Upadhi, when this is spoken, that the Jivan Mukta becomes Videha Mukta, we have little doubt or suspicion or ambiguity. Answer is what for that? He will become one with that universal Sachidananda Brahma. क्वेश्चन इज गॉड क्या इंडिविजुअल के रूप में नहीं रहेगा क्या? अरे रहने की जरूरत क्या है? That question, if you can catch it without answer, only question, you have understood, you have sorted out it. Like when the river merges in the ocean, will it not be there as a river? अरे क्या जरूरत है? When he tells me it is one with the infinite ocean, if this clicks to us, that fear of losing individuality is transcended. That's the biggest obstacle for not doing sadhanas. क्या हो जाएगा मेरा करके? अरे your finitude goes away, you become infinite. Your limitations go away, you become limitless. Your all birth, death, growth, modification, this nonsense goes away. You will be birthless, deathless, changeless, modificationless being. ये click नहीं होता because we don't think about it. And these are the portions. That's what I said. Every word has to be deeply studied. This we spoke 2.5 months back, trying to make it simpler. What did we say if you remember? I is there in all. That I has two options. One, to identify the limited and suffer limitations. I remains. Identify the infinite and transcend all limitations. I remains. I remains. This is an objectively I am saying. Subjectively kaho to I remain. I don't get destroyed. I suffer because of limited identities. I transcend all sufferings by identifying the infinite, which is my essential nature. अहम का अर्थ ही वो है, न हन्यते इति अहम. न हन्यते इति अहम, which can never be destroyed. That's called aham. Therefore, I will not perish.
द विदेह मुक्ति में आई बिकम वन विथ सबस्ट्रेटम सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म। अब इसमें मजा क्यों नहीं दिखता? मजा तो होता है पहुंचने के बाद, क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वी हैव ए आइडिया, मजा एक्सपीरियंस एंड हैबिट ऑफ लिविंग एज अन्नमय प्राणमय इत्यादि। जैसे स्लम में रहने वाले को उसी में आनंद आता है। दे डोंट नो द ग्लोरी ऑफ दैट स्टेइंग इन 5 स्टार 7 स्टार। दैट इज देयर मजबूरी। दे डोंट नो कि इसमें इतने फैसिलिटीज होते हैं, इतना आनंद आता है। Everywhere, why people don't afford money? Therefore, they just buy here and there sabji. But when they have good amount of purchasing capacity, go to supermarkets, big places where neat and clean things are sold, pay the money and enjoy. Who says not? But जिसको ये वाला आदत होता है ना, वो समझ में नहीं आता वैसा हो सकता है करके। Why not? Why go घसीटते हुए बस में, स्कूटर में? Just go in a car when you can afford. Why not? In the same way, when you can be infinite Brahma Tattva, why suffer as a Jiva identified Deva, Dehadi Upadi? One way of looking at it is this. Second is what? Having merged with that infinite Brahman, be attentive. Earlier he was expressing through one set of Panchakoshar, one Upadhi set. Now he will express through the infinite Upadhis. So through one Upadhi, that's the Anandam. With all the Upadhis, when he expresses, how much is his Ananda? ऐसा भी हम समझ सकते हैं। बट भगवान का कहना है ततः मई एव साक्षात प्रविलीयते, ही विल मर्ज इन मी द परम ब्रह्म। हो गया। द नेक्स्ट वन, आदौ मध्ये अंततः भवम, द होल वर्ल्डली entertainment or involvements are आदि में, in the beginning, मध्य में, middle, end में भी भय कारणम and शोक कारणम. It will give fear, it will give misery. Thoroughly you understand it. Having understood what to do, hitva samastam, give up all of that. Now, when the bhava, the samsaric pursuits are given up, samsaric desires are given up, knowing that they are the cause of bhaya and shoka, how do we get all these samsaric things? By doing variety of the karma indicated in the Shastras. That is called vidhi vada. Vada means vadanam. Vidhi is what to do. And who does the vidhi vadanam? Shastra. तो इवन शास्त्र में बताए विधिवदन को भी आप छोड़ सकते हैं उस समय। दिस द मीनिंग ऑफ सर्वधर्मान परित्यज। तो धर्म किसको होते हैं? उपाधियों को। अभी उपाधियों के परे आत्मा में मैं हूं, तो मेरा धर्म है सच्चिदानंद, आई एम ऑलरेडी इन दैट। व्हाट इज द नीड ऑफ मी फॉलोइंग द धर्म ऑफ द उपाधिस? सर्वधर्मान परित्यज। हियर आल्सो हित्वा समस्तम, देन विधिवाद चोदितमपि हित्वा। Vidivada Chodita means, as said in the Shastras, the injunctions of Varna Dharma and Ashrama Dharma. अरे संसारिक को साधक में लाने के लिए, साधक को सिद्धि दिलाने के लिए they are there. Once you get the siddhi, they are not required. They are all the means. So Vidivada Chodita Samastitva Bhajet Swam Atmanam. So that way you worship. Bhajet here means pursue your own pure self as what? Atha Akhila Atmanam Atmanam. So your own self as the self of all beings. That way keep meditating. This is called as Brahma Atma Ekamodha or Sarva Atma Bhava. Now I to spoke to you in 5 minutes so fast, but this is not the way it is spoken or heard. Every word again you have to feel what it looks like. ना वेदांत को समझने के लिए फीलिंग्स का थोड़ा थोड़ा यूज करना शुरू करना है. फील मीन्स just have an imagination, have a projection, have an idea as to how it looks like. Like in the world material, we do know, when I work this way, I earn so much money, I buy my own house and get my own car, and in that car I happily move. Don't you imagine and feel that joy? Here also, just feel sometimes what it looks like. That inspires. Take it up. We generally don't do that. Feelings करना चाहिए, है ना? We do have the bhoga, the feelings. Yoga भी करना चाहिए. When I become, just now we said, as an example to something else, but more fitting is that example for this topic. Imagine that I am the self in all beings. Then every self, whatever the ananda it is getting, that all becomes my own bliss. And everything is me, morning class. I don't know, Mandukya ho ya Aitareya ho.
मांडुक्य में ही है, सर्वमी यत्र आत्मा एव अभूत् तत्र केन कं पश्येत् केन कं विजानीयात्. When everything is my own self, nothing other than me, other than love and service, how can there be raga, dvesha, kama, krodha, shatru, mitra, samsara? नहीं रहेगा. So some atmanam akhila atmanam atha bhajetu. Just be in that revelation of discovering yourself in the self of all. हो गया. ये है एक बड़ा सा श्लोक, सूक्ष्म, बहुत बढ़िया. One more shloka, I think I will touch only, can't explain now. कि आत्मनि अभेदेन विभावयन idam. Morning. Sarvam hi, omiti etad aksharam idagam sarvam. What Telugu people did not study because nobody coming nowadays. In the Mandukya Upanishad is this only. Atmani abhedena vibhavayan idam. Means idam rupena, whatever is found so far, is discovered as so far, is discovered to be the aham only. There is nothing called as idam other than me. So the Ishavasya Vidagam Sarvam, the Ishavasya Upanishad, and all Upanishads talk about the idam is nothing but aham Brahma only. Each Upanishad in its own way. Taittiriya and Aitareya told that from Lord only created the whole world out of himself. Like today's Bhashya Vyasa, he has created the world with the material from his own self, not taking the help of anyone. What we started today in Aitareya, what is the Vakya Artha of the studied subject of the first Adhyaya Pura? Usme, without taking anybody's help, the Lord has created all the world out of himself. In this way, the whole world is a Paramatma. Only these Upanishads tell. Some other Upanishads go and don't know the substratum. Substratum is one Brahman only. On that only the whole is projected. So that way the whole world cannot exist without Parabrahma. This tomorrow we'll talk both in Aitareya and Mandukya. Very sublime. Especially in Mandukya Upanishad. When we prove how the whole Jagat is Omkar. And how Om is Brahman. ये कल दोनों तेलुगु में होने वाले हैं. So idam atmani abhedena vibhavayan. Contemplation and know that everything which was idam is aham only. Then what will happen? Bhavati. It will result into one thing. What is abhedena maya atmana tada? Then you will have abheda with me also because I alone am expressing as is jagat. तो इसमें ईश्वर जीव जगत भेद निकल कर एक ही ब्रह्म का यहाँ अनुभव हुआ. Then this I'll talk little more tomorrow. Beautiful 4 examples are given. Yatha jale jalam vari nidhau. When the rain drops the rain in the ocean or river, how it becomes one? You can't separate the raindrops again from it. One ho gaya. Another same example, yatha paya kshire. In the milk, when you pour the milk, you can't separate the poured milk. Ek ho gayo. Third example, vyad yomni. When the walls are removed, then pot space when merges the total space, you can't specify ye pot ka space hai karke. Third one. Fourth is what? Anile atha anilaha. When the fire merges with fire, you can't separate it now. Agni agni mein ek. Because tattva hai dono. Agni agni tattva, pani pani tattva, dudu dudu tattva, akash akash tattva. Same way, when you discover your oneness with the whole universe, then you will discover your oneness with me. Therefore, the universe, the idam, and you and me, they are not three. The one substratum seen as Ishvara Jiva Jagat Bheda. That's the shloka. 1 or 2 subtle thoughts. Tomorrow we discuss. आज काफी है. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. परम ऋषिभ्यो नमः. श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः. बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय. ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्य नाथाय श्री महाविष्णवे नमः. ओम भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्तके की गना गना रोग भरतदम भोलिर मृत्युदार कुटारिकाय नमो नमः. ओम नासै रोग हरे सब पीरा जबत निरंतर पीरा. ओम श्री नमः.
ओम श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः ओम श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः ओम श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः ओम श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः ओम श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः शिवस्मरणम् ओम नमः शिवाय 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 ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च राम मंत्र ओम राम 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 friends 900 Bala Trivasari Sahasranamavali we did 900 to 1000 today we do so that's one more Sahasranamavali करने का पुण्य अनुग्रह हमको मिलेगा ठीक है ओके ओम 900 to 1000 ओम अव्यक्तरूपिण्यै नमः ओम व्यक्तायै नमः ओम योगिन्यै नमः ओम पीठरूपिण्यै नमः ओम निर्मदायै नमः ओम धामदायै नमः ओम आदित्यायै नमः ओम नित्यायै नमः ओम सेव्यायै नमः ओम अक्षरात्मिकायै नमः ओम तपिन्यै नमः ओम तापिन्यै नमः ओम दीक्षायै नमः ओम शोधिन्यै नमः ओम शिवदायिन्यै नमः ओम स्वस्त्यै नमः ओम स्वस्तिमत्यै नमः ओम बालायै नमः ओम कपिलायै नमः ओम विस्फुलिङ्गिन्यै नमः ओम अर्चिष्मत्यै नमः ओम द्युतिमत्यै नमः ओम कौलिन्यै नमः ओम कव्यवाहिन्यै नमः ओम जनाश्रितायै नमः ओम विष्णुविद्यायै नमः ओम मानस्यै नमः ओम विन्ध्यवासिन्यै नमः ओम विद्याधर्यै नमः ओम लोकधात्र्यै नमः ओम सर्वस्यै नमः ओम सारस्वरूपिण्यै नमः ओम पापघ्न्यै नमः ओम सर्वतोभद्राय नमः ओम त्रिस्थायै नमः ओम शक्तित्रयात्मिकायै नमः ओम त्रिकोणनिलयाय नमः ओम त्रिस्थायै नमः ओम त्रयीमात्रे नमः ओम त्रयीतनवे नमः ओम त्रयीविद्यायै नमः ओम त्रयीसारायै नमः ओम त्रयीरूपाय नमः ओम त्रिपुष्कराय नमः ओम त्रिवर्णाय नमः ओम त्रिपुराय नमः ओम त्रिश्रियै नमः ओम त्रिमूर्त्यै नमः ओम त्रिदशेश्वर्यै नमः ओम त्रिकोणसंस्थायै नमः ओम त्रिविधाय नमः ओम त्रिस्वराय नमः ओम त्रिपुराम्बिकाय नमः ओम त्रिदिवाय नमः ओम त्रिदिवेशान्यै नमः ओम त्रिस्थायै नमः ओम त्रिपुरदाहिन्यै नमः ओम जंघिन्यै नमः ओम स्फोटिन्यै नमः ओम स्फूर्त्यै नमः ओम स्तंभिन्यै नमः ओम शोषिन्यै नमः ओम प्लुतायै नमः ओम ऐंकाराख्यायै नमः ओम वामदेव्यै नमः ओम खंडिन्यै नमः ओम चंडदंडिन्यै नमः ओम क्लींकार्यै नमः ओम वत्सलायै नमः ओम हृष्टायै नमः ओम सौहुकार्यै नमः ओम मदहंसिकायै नमः ओम वज्रिण्यै नमः ओम द्राविण्यै नमः ओम जैत्र्यै नमः ओम श्रीमत्यै नमः ओम गोमत्यै नमः ओम ध्रुवायै नमः ओम परतेजोमय्यै नमः ओम संविदे नमः ओम
पूर्णपीठनिवासिन्यै नमः ॐ त्रिधात्मायै नमः ॐ त्रिदशायै नमः ॐ त्रिअक्षायै नमः ॐ त्रिज्ञै नमः ॐ त्रिपुरमालिन्यै नमः ॐ त्रिपुराश्रियै नमः ॐ त्रिजनन्यै नमः ॐ त्रिभुवै नमः ॐ त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः ॐ कुमार्यै नमः ॐ कुण्डल्यै नमः ॐ धात्र्यै नमः ॐ बालायै नमः ॐ भक्तेष्टदायिन्यै नमः ॐ कलावत्यै नमः ॐ भगवत्यै नमः ॐ भक्तिदायै नमः ॐ भवनाशिन्यै नमः ॐ सौगन्धिन्यै नमः ॐ सरिद्वेण्यै नमः ॐ पद्मरागकिरीटिन्यै नमः ॐ तत्त्वत्रयै नमः ॐ तत्त्वमयै नमः ॐ मन्त्रिण्यै नमः ॐ मन्त्ररूपिण्यै नमः ॐ सिद्धायै नमः ॐ त्रिपुरावासायै नमः ॐ बाला त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ॐ श्री बाला त्रिपुरसुन्दरी मात्रे नमः ॐ श्री बाला त्रिपुरसुन्दरी मात्रे नमो नमः। हो गया 1000। ब्यूटीफुल 1008। व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग इट वाज। अम्मा विल डू द आरती आफ्टर अवर आरती ओनली पढ़ेंगे आज, है ना। So we have seen Kakaradi, Kali, we saw Dattatreya, we saw Durga Sahasranamavali, Kamala we have done, Bala Trivasundari we have done, then Bala also we have done. Now tomorrow onwards we have in the list of this 22 में हनुमत सहस्र नामावली। अच्छा है कि नहीं? बढ़िया सा। अरे रामा। तो आप हनुमत सहस्रनामावली फ्रॉम द स्तोत्र निधि जस्ट डाउनलोड कर लो, या जैसा हमने किया उसको स्क्रीन में सेव की, सो दैट इजी फॉर मी टू रिकॉग्नाइज इट एज आई एम डूइंग इट एवरी टाइम। दिस टाइम अभी का उसको निकाल दो जो हो चुका है, हनुमान जी का आप ले जाके वहाँ सेव कर दो। फर्स्ट पेज में ही यू कैन मेक ए फोल्डर, इन दैट यू कैन पुट ऑल दिस चैंटिंग्स। दैट्स व्हाट आई डू ऑल द टाइम। कर दिया मैंने। To avoid the confusion, the Bala wala ho gaya. I'll just thanks to mother, and in this way let us do our mother's chantings today. आरतियां हैं अभी, okay. These are all in Hindi more than Sanskrit. Hindi I don't know, तो क्या करूं मैं, पढ़ लेते हैं जैसा है। पाठ के तो क्या प्रॉब्लम है, ओम। ये सब का ना राग होता है, हमको तो पता नहीं। ट्राई करते हैं श्री दुर्गा जी। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय, भयहारिणि भवतारिणि भवभामिनि जय जय। तू ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर परशिव सुर भूपा। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। अविकारी अगहारी अकल कलाधारी, कर्ता विधि भरता हरिहर संहार कारी। तू विधि वधूर मातु उमा महामाया, मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। राम कृष्ण तू सीता व्रजनार, राम कृष्ण तू सीता व्रजरानी राधा। तू वांछा कल्प द्रुम हारिणि सब बाधा। दश विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा, अष्टमातृका योगिनी नव नव रूप धरा। तू परधाम निवासिनी महाविलासिनी, तू ही श्मशान विहारिणि तांडवलासिनी। तू सुरमुनि मोहिनी सौम्या, तू शोभा धारा। विवसन विकट स्वरूप प्रलयमयी धारा। तू ही स्नेह सुधामयी, तू अति गरलमना। रत्न विभूषित तू ही अस्तितना। मूलाधार निवासिनी इह पर सिद्धि प्रदे, कालातीता काली कमला तू वरदे। शक्ति शक्ति धर तू ही
नित्य अभेदमयी भेद प्रदर्शिनी वाणी विमले वेदयित्री हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे है कपूत अति कपटी पर बालक तेरे निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि की जय करुणा कर करुणामयी चरण शरण दी जय जय जननी जय जय माँ जग जननी जय जय भयहारिणि भवतारिणि भवभामिनि जय जय. Somehow I have done it. Now Sri Devi Arati, ये simple है. आरती की जय शैल सुता की आरती की जय शैल सुता की जगदम्बा की आरती की जय स्नेह सुधा सुख सुंदर ली जय जिनके नाम लेत ध्रुग भी जय ऐसी वह माता वसुधा की पाप विनाशिनी कलिमल हारिणी दयामयी भव सागर तारिणी शस्त्रधारिणी शैलविहारिणी बुद्धिराशि गणपति माता की. जो टेका होता है आरती का, आई एम नॉट डूइंग इट. सिंहवाहिनी मातु भवानी गौरव गान करई जग प्राणी शिव के हृदयासन की रानी करई आरती मिलजुलता की आरती की जय शैल सुता की आरती की जय शैल सुता की. ये बड़ा है श्री अंबाजी आरती है ना. जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी. मांग सिंदूर विराज तटी को मृग मद को उज्ज्वल से दौ नैना चंद्रवदननी को कनक समान कलेवर रक्तांबर राजय रक्त पुष्पगलमाला कंठन पर साजय के हरिवाहन राजत खड्ग कपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुखहारी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी. कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निशिदिन मदमाती चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी. फिर ओम जय अम्बे होता है. आई एम नॉट डूइंग दैट. 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मनवांचित फल पावत सेवत नर नारी. ओम जय अम्बे. कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे
कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावै। ओम जय अम्बे गौरी मय जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। बोल श्री अम्बे अम्बे माता की जय। टुडे that Sahasranama is over and Aarti also. What a good combination, na? बढ़िया सा वो coincidence. Thank you. शांति मंत्र सब हमने कर ली, ये भी हो गया। टुमारो ज्वाला काली जी की आरती होगी। देन देन वी हैव श्री गीता आरती, लक्ष्मी आरती, तीन हो गए। देन जाने की चारों कर दे तो कल के दिन वर्ल्ड कप जीत कर हम सब आरती करेंगे। इसी टाइम पे मैच चलता होगा। सब डिसाइड हो गया, इंडिया को ही मिलना है करके, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। देना ही पड़ेगा। लिया दिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने लिया। सो हमने दिया उनको शिकस्त, उन्होंने लिया परास्त। इस तरह से पहले क्या होता, इंडिया ने दिया, ऑस्ट्रेलिया ने लिया। 2003। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र नेमा नारायण दासरथ ओम योग व्यास मंगलम मंगलम। ओम कात्यायन विद्महे कन्याकुमारी तन्नो ओम महादेवी विद्महे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हम सम सावित्मे परम सहित तन्नो ओम सब प्रचोदयात्। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमावर चंद्रचूड़ भगवान की जय। रामायण महाभारत भागवत उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र योग वासिष्ठ पातंजलि योग अध्यात्म रामायण सूत्र संहिता शिवपुराणादि सनातनम समस्त सनातन वैदिक संस्कृति श्रुति पुराणिता शास्त्र की जय। वेद व्यास सुखदेव सूतादि भागवताचार्य की जय। विश्वामित्र स्वामी तुलसीदास रामायणाचार्य की जय। हिरण्यगर्भ कपिल पतंजलि व्यास देव दर्शनाचार्य की जय। वेद व्यास वैश्व याज्ञवल्क्य कांति शंकर ब्रह्म विद्याचार्य की जय। मनोभय समंदर की जय। रघुनाथ महाराज की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर महादेव हर सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंदा गोविंद। जानकी जीवन स्मृति जय। राम राम। अम्बे में आदिपराशक्ति माता की जय। अम्बे में बाला त्रिपुर सुंदरी माता की जय। बोलो भाई समंदर की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। समस्त श्रोता भक्त साधक सेवक उपासक जिज्ञास धर्म संस्थापक गण की जय। भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। वैदिक हिंदू संस्कृति सांप्रदाय की जय। आध्यात्मिक जीवन की जय। देखो टुडे यू नो इन आवर स्तोत्रम क्लास वी हैव डन देवी स्तोत्रम्स, है ना, ना तृप्ति हो गया। टुडे वी हैव डन अवर बाला त्रिपुरा सुंदरी अगेन माता रानी का, एंड अगेन आरती माता रानी का। तो भरपूर माँ का कृपा हमारे ऊपर बरस रहा है। जस्ट फील दैट। थैंक यू। सी यू टुमारो। श्रुति माता को तो चल ही रहा है हर दिन। या वंडरफुल इट इज। सी यू टुमारो। थैंक्स। कल भी क्लास रहेगा, क्रिकेट मैच भी चलता रहेगा, हमारा ये मैच भी चलता रहेगा। डू दे स्टॉप देयर मैच फॉर माय क्लास? नहीं ना? देन व्हाई शुड आई स्टॉप क्लास?